कभी बात करने की कोशिश करो तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते थे। कभी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, तो कभी लैंग्वेज बैरियर, तो कभी कोई टूटी फूटी इंग्लिश का मजाक उड़ाता था, तो कभी कोई बुली कर देता था। ये सब देखकर कॉन्फिडेंस और नीचे। तो मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए मन में बना लिया कि ये सारे लोग ना मतलबी होते हैं, इन्हें दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ जज करते हैं दूसरों को। बट मुझे फर्क पड़ता था, मुझे बहुत फर्क पड़ता था। Am I the only one who has gone through all of this? I am sure not. There are many out there who've gone through the same and some maybe even worse. And there are 5 simple steps that I want to share with you that you can use to your benefit to improve your spoken communication skills. Imagine a room full of people sitting, talking to each other, making jokes and planning what they'll do in the evening. And in that very room, in a corner is a boy sitting, waiting, when will somebody come and talk to him like that? That boy was waiting in the corner because he did not have the courage to get up and strike a conversation. That boy sitting in the corner was me. I spent most of my childhood locked up in a room by myself, while other kids went out and used to play with each other. मैं नहीं जाता था क्योंकि मुझे कोई बुलाता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं बात नहीं करता था, बात नहीं करता था क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थे, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थे तो बात करने का कॉन्फिडेंस ही कहाँ से आता। और कभी बात करने की कोशिश करो तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते थे। कभी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, तो कभी लैंग्वेज बैरियर, तो कभी कोई टूटी फूटी इंग्लिश का मजाक उड़ाता था, तो कभी कोई बुली कर देता था। ये सब देखकर कॉन्फिडेंस और नीचे। और अगर कभी क्लास में सबके सामने खड़े होकर बोलने की अपॉर्चुनिटी मिले तो दिमाग में चलता था, क्या मैं सही बोल रहा हूं? Then I used to revise those sentences 2-3 times in my head before saying it out loud. और अगर बोल भी दो, then I used to seek outside validation. क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? कहीं ये मुझे जज तो नहीं कर रहे? As human beings, हमारी एक आदत होती है, अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो अपने आप को कन्विंस करने के लिए हम कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं। तो मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए मन में बना लिया कि ये सारे लोग ना मतलबी होते हैं, इन्हें दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ जज करते हैं दूसरों को। उन्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे फर्क पड़ता था, मुझे बहुत फर्क पड़ता था। खैर, स्कूल तो ऐसे ही निकल गया। मैंने सोचा स्कूल के बाद लाइफ बेटर होगी। हमारे टाइम पर एक ट्रेंड चलता था कि 10th के बाद आप IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाओ। सब जा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ, पढ़ाई करेंगे, IIT JEE निकालेंगे, लाइफ में बहुत कुछ फोड़ देंगे। मैं ना कुछ नहीं फोड़ पाया, 1 साल में वापस आ गया। But something different happened when I came back. When I came back to that very room where I spent most of my childhood by myself, suddenly all my childhood memories flashed in front of me. And I was in tears. I thought to myself, यार लोग बदले, माहौल बदला, जगह बदली, but मैं वैसा का वैसे ही हूँ। अभी भी अकेला फील होता है, अभी भी बात करने में डर लगता है लोगों से। ऐसा कब तक चलेगा यार? मैं अपनी पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं रह सकता। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? And this was the tipping point for me. क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? You might have heard that saying, when the student is ready, the teacher appears. And when I was ready to be a student, my teachers appeared. उन दिनों मैं YouTube पर motivational video सर्च करता था and I came across 2 gentlemen who have been a great influence in my life. One of them was Jim Rohn. Jim was sharing his personal story जहां वो अपने mentor के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सर मेरी लाइफ कब बदलेगी? When will my life change? When will my life get better? To which his mentor replied in a very simple yet effective manner. When you change, it will all change. When you get better, it will all get better. जब आप बदलोगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी. The second person I came across was Tony Robbins. He said something like, people don't get their shoulds, they get their musts. For example, I should work out, I should lose weight, I should work on my communication skills, I should work harder. If we say that to ourselves,
maybe we'll work on that, maybe we'll not. Versus, I must work out. I must work on my communication skills. I must work harder. When our shoulds change to our musts, that's when our life starts to change. And that was something that really touched me. इन दोनों की बातें सुन के मुझे इतना मोटिवेटेड फील हुआ कि अब तो लाइफ में कुछ ना कुछ सही में उखाड़ना है. And I thought to myself, from now on, I will grab on every opportunity that comes my way to improve my communication skills. But that wasn't as easy as I thought. खुद को बदलना इतना आसान नहीं होता. It takes time. It's a journey and a roller coaster ride, ups and downs. 2 दिन आप मोटिवेटेड फील करते हो, तीसरे दिन कुछ गलती हो जाती है, गिर जाते हो, वापस पुराने ट्रैक पे. टू फिक्स दैट, मैंने अपने फोन से सारे म्यूजिक फाइल्स हटा दिए and I replaced them with audio files and motivational speeches of Jim Rohn, Tony Robbins, Les Brown, and all the motivational speakers that I could think of. And I made sure that I took my daily dose of motivation after waking up, while I'm working out, before going to bed, or before an important presentation, until it became an obsession for me. With my newfound obsession, I entered into college and I grabbed every opportunity that I could. From talking to new people, to giving presentations, to performing in theater, to raising my hands in PDP classes, just to be a part of group discussions, चाहे मुझे टॉपिक के बारे में पता हो ना पता हो. मेरा ऑब्सेशन इस लेवल तक चला गया था कि मूवीज में देखकर मैंने अपने रूम की दीवारों पे इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए थे कि जब भी मैं उनसे पास हो, एक नज़र पड़ जाए और मैं रिवाइज कर सकूं. वो करने के लिए घर वालों से थोड़ी सी डांट पड़ी, क्योंकि जो मैंने लिखा था वो मिट नहीं सकता था, तो वी हैड टू रीपेंट द वॉल्स. बट मजा बड़ा आया था. एंड आई फेल इन लव विद दिस प्रोसेस, बिकॉज विद एवरी सिंगल स्टेप, with every single mistake that I made, I could see a little part of me improving. I could feel a little part of me feeling proud of myself. And during that process, something very important changed. The way I looked at things changed. I realized nobody was judging that kid sitting in the corner. Everybody was just busy doing their own thing. सब अपनी life में मस्त थे. That kid was judging his own capability to get up and communicate. He did not need anybody to come up to him and talk. He needed to allow himself to gain the courage and confidence to get up, talk, make mistakes, and learn along the way. Applying my newfound courage and confidence in my professional career, today I proudly introduce myself as Aditya Gupta, a successful trainer and keynote speaker who has trained and interacted with over 10,000 professionals from MNCs like Wipro GE, American Express, PwC, Deloitte, and startups like Byju's Urban Company, and many more. I was also amongst the top 150 speakers in the World Championship of Public Speaking, organized by one of the largest organizations across the globe, working in the field of improving communication and leadership skills. I was also awarded recently as the nation's Youth Icon Award by the world's youngest publishing agency for my work with the youth of the country to help them find their voice. And now, I am on a mission to impact 1 million lives by the year 2030 and making sure there is no kid sitting in the corner afraid to express themselves. When I look back, I'm not embarrassed or ashamed of my childhood anymore. Because if that did not happen, this would not have happened. That was a blessing in disguise for making me who I am today. But am I the only one who has gone through all of this? I am sure not. There are many out there who've gone through the same, and some maybe even worse. And if you are that someone, through this medium, I want to tell you that if I can, you can. And there are 5 simple steps that I want to share with you that you can use to your benefit to improve your spoken communication skills. Number 1 is the most important one. This is the first step before you embark on that journey of personal growth, which is finding your why.
Why do you want to do it? Why do you want to improve your communication skills? What have been the hardships you have been through because you were unable to communicate well? Were you unable to socialize? Were you unable to crack the interview? Are you unable to grow in your professional career because of that? Whatever that is, turn the pain of that hardship into power and use it to fuel you, to push you forward. The stronger your why is, the more chances are that you will stand up straight in the face of adversity and attack. Number 2, गलत इंग्लिश बोलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. असली प्रॉब्लम है अगर मैंने गलत बोल दिया तो आसपास के लोग क्या कहेंगे. So make sure that you surround yourself with the right kind of people who give you constructive feedback to push you forward. Number 3, allow yourself to make mistakes. आप गलत इंग्लिश बोलो, लेकिन बोलो at whatever opportunity that you can find around yourself, either in college or at a meeting in your corporate office. Just make sure that you get up and speak. And whenever somebody corrects you, instead of getting offended, shut your ego and thank them. Number 4, we are all living in this digital age where access to information is available at our fingertips. Make sure that you enroll yourself in a course that can guide you towards improving your skills. Josh Skills by Josh Talks is one such platform. And number 5, effective communication is a skill, and just like any other skill, it can be learned and improved upon by consistent and regular practice. And lastly, once you become an effective communicator, which I know you will, make sure you help someone and uplift them who's going through the same thing. In the words of Jim Carrey, the Hollywood actor, the effect we have on others is the greatest currency there is. On that note, chalo, कुछ उखाड़ते हैं. Thank you. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे. आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की. दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं. मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं. और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ. इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं. आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ.